Yes, very good afternoon, everyone. Welcome to another engaging session of Synergysphere, which is a virtual event by the students and for the students at MIT SD. I'm Trupti Kulkarni, your host for today's session. Synergysphere is more than just a series of live discussions. Is definitely it is a platform for growth, for connection, for inspiration as well. This is where we come together as a community to learn from each other's uh, ex- uh, journeys, exchange ideas, and build meaningful networks as well. Today's session promises to be both inspiring and transformative. The theme is "Why Do We Fall, Master Bruce? Rising Stronger Through Today's Life's Challenges." This topic is definitely more than just a theme. It's a journey of resilience, transformation, and growth, which aligns perfectly with our speaker's inspiring story. This theme is actually chosen by him. So, we have with us here today Mr. Hardik Verma, a fellow MIT SD student and a seasoned professional with over 14 years of diverse experience. Hardik is a content manager, he is a brand strategist, musician, poet, and an entrepreneur as well. His journey is a testament to resilience and the power of embracing change. Hardik has overcome significant personal challenges, including battling hypersensitivity pneumonitis with 46% lung capacity, managing emotional hardships during his parents' illnesses, and also rebuilding after setbacks. So he has turned these adversities actually into stepping stones through creativity, spirituality, and courage. From founding his digital studios and directing animated series to leading brand strategies. Hardik's journey is nothing short of inspiring. So let's give him a warm welcome. Welcome to the session, Hardik. Thank you so much. It's an absolute honor to have you here today. For thank you for joining us and sharing your incredible journey. Agreeing to do that. So let's go. Let's get to know you a bit more before you Sure. dive into today's topic. Correct. Yes. So let's start by getting to know more about you. So failure has always, been considered a stepping stone to success. So beginning with your, journey, what's one failure that you have experienced that led to a breakthrough or maybe a significant growth? See, I think, of course, finding my own company, a private limited, and going all in without any, investor. You can say that was one of our biggest mistakes. So Correct. that led to failure because after 3 years of work, we had to shut down the company. And but that also taught me a couple of things, and one of the reasons why I'm at MIT is to understand there are a lot of aspects to a business and not just a singular creative strategy to it. Correct. And so I think that is one of the best failures that I have faced and learned from. That's perfect. So, thank you for sharing that perspective. It's truly inspiring to hear how you have turned your challenges into opportunities for growth. Speaking of turning adversity into strength, let's also talk about your session today. First of all, so your session is titled "Why Do We Fall, Master Bruce?" So, what inspired you to choose this theme, and how does it resonate with your personal journey? Correct. So I think I mean, most of the people would know Master Bruce or Bruce Wayne as Batman, and so I've been avid reader of reading, comics since childhood, novels, even mythology for that sake. And ऐसा है कि ये सारी स्टोरीज में एक चीज होती है कि द प्रोटैगनिस्ट द हीरो वो ऐसी challenges फेस करता है and he has to overcome these challenges. So if we all consider our journey in that way, probably that kind of pushes us to do more. So that's why the topic being this. Correct. So that's such an compelling reason behind the theme. Seems your personal journey has been a blend of diverse fields. So let's explore how your education influenced your career path. You have had an interesting educational journey, definitely from engineering to digital animation. So could you please share how these fields
influenced your career path and creativity? Okay, so I think since childhood it was more of being creatively inclined. Engineering was more like, karna hai. This is the step. After 10th, you get these many marks, you go to the top college, you study, and but creative inclination actually. So I started working along with my college, and I learned HTML and Flash. तभी books आती थी for Mhm. dummies करके. Now तो सब online आ जाता है. तो from those books I had learned those, and kind of it gave me much more creative perspective कि ये चीजें भी है explore करने को. And Flash से went into storytelling and then animation finally. Okay. So That's fascinating. It's fascinating to see how your education, laid the foundation for creativity and innovation in your whole career right now, right? So, speaking of innovation, let's delve into your professional milestones now. So, your career spans a role as an entrepreneur, animator, and brand strategist. So, right. Hardik, tell me which milestone stands out as a defining moment in your professional journey? Again, I'll say that finding, founding the company, like, वो professional journey में it's a big thing to have your own thing. Especially जब animation industry 2015 में, there were not much original content which was picked up, Hmm. and we Correct. were trying to push a lot of our content out there. Maybe Hmm. we were a bit early than the Hmm. OTT era that started in 2019, Okay. but yeah, that I think that still is a milestone for me. Thank you so much for sharing that. That brings us to the next question. How did you stay driven during the your most challenging times, facing challenges, especially like your situation, your health situation, and your personal losses? You have shown incredible resilience as well. What kept you motivated during these tough times? आई थिंक दो चीजें होती है. एक पैशन होता है दैट Hmm. आपको कुछ करना है तो कर ही लेना है. आई थिंक Correct. एज वी ग्रो अप वी फॉरगेट दैट वो चाइल्ड लाइक पैशन और जो इंटरेस्ट जनरेट होता था बचपन Hmm. में, वैसा हम छोड़ देते पीछे. वो Right. नहीं छोड़ना चाहिए. मे बी वी कैन कीप दैट सेम पैशन. And second, of course, support of the right people, right family members, the friends who can always motivate you. And Right. also knowing that situations are temporary, but dreams are going to be permanent. So, way driving factor. So, Yes, definitely. Thank you so much for saying that out. It has definitely, I'm sure it is inspiring our students as well. So you have Hadik, you have mentored over 1,000 students and led teams across various industries. What is your one you can say key philosophy for fostering collaboration and trust within your team? okay, I think it is going to be a topic again in the presentation as well. But Okay. empathy, I think I'm Hmm. a big advocate of it. Empathy Okay. रखना, ये जानना कि वो डेस्क के पीछे एक ह्यूमन बीइंग है Hmm. is very important, because that kind of helps you connect with them, and they will deliver everything that you ask. So Correct. they'll feel as a part of your team. तो वो एक इम्पॉर्टेंट है. फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो एम्पैथी इज इम्पॉर्टेंट कि उनको मोटिवेशनली ड्राइव कर सके, बिकॉज Hmm. एंड टू अंडरस्टैंड दैट एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट. हम Correct. सबको एक तरह नहीं मान सकते कि ये इतना आउटपुट दे रहा है तो वो इतना आउटपुट क्यों नहीं दे. तो हाउ टू smartly work around that is what I feel is the right thing to do. Absolutely. Empathy is definitely something which is not only useful in one field or the other. It is like wherever humans are, humko empathy is definitely one quality that you have mentioned is very important. I really agree Agree. with you on that. So moving on to the next question, which is leadership qualities. What leadership qualities are essential, do you think, for overcoming any creative or operational challenges that you have had? And how Okay. also is MIT helping you in your professional journey? We'd like to know. Okay. Firstly, I joined MIT because, one, there is practical experience. हम इतना Hmm. कुछ सीख लेते हैं जॉब पे या कहीं पे रह के. But Correct. एक see the book
and the college and the education is always a stepping stone, कि वो हमें एक गाइडलाइन मिलती है कि 1 2 3 4 ये चैप्टर्स है, तो उस Correct. हिसाब से आई एम ट्राइंग टू लर्न कि क्या मुझे आता है, और जो मुझे आता था वो सही है, और क्या मुझे नहीं आता. सो इट्स काइंड ऑफ हेल्पिंग मी टू डू दैट, and always wanted to pursue post grad, but didn't get the time. So, you know, MIT gave me a right opportunity to do that. Correct. Thank you so much for sharing that. Moving on to the creativity part now. So, from founding your own digital studio to performing with your band, Sheher, creativity seems to be at your core, right? So, how do you balance your professional strategy, or you can say your time with your artistic pursuits? I think now सबसे easy answer है ये. It's called schedule, Hmm. timetable, जो हम बचपन से बनाते हैं. And answer बहुत simple है, but to actually inculcate it is difficult. Hmm. But अगर आप disciplined way में आपका time slots अगर आप workout कर लो, तो बहुत इजी हो जाता है. वेरी Correct. सिंपल एग्जांपल इज, हम अपने ऑफिस का, बच्चों का, स्कूल के हिसाब से, ऑफिस के टाइमिंग हिसाब से सब बराबर स्केड्यूल फॉलो करते हैं, बट Hmm. खुद के लिए नहीं करते. द ओनली थिंग इज यू हैव टू ऐड अ लिटिल फॉर योरसेल्फ आल्सो. तो वो करके आई एम एबल टू बैलेंस माय टाइमिंग बिटवीन द अदर थिंग्स. एंड वन लास्ट थिंग इज, जो भी करते हैं मे बी देर इज अ पर्सपेक्टिव टू इट के अरे यार ये खत्म करना है, या फिर ये खत्म करके मे बी आई गेट टू डू व्हाट आई Hmm. लव टू डू. तो वो Hmm. पर्सपेक्टिव थोड़ा एक पुश करना जरूरी है. इट्स नॉट सिंपल ऑफ कोर्स, जितना इजी बोलना है, बट वी कैन ऑलवेज ट्राई. Correct. Thank you so much for sharing that. Definitely, balancing your work and your creative pursuits and your academic also requires scheduling, which is a very important factor that you know, it is very obvious, but then we tend to certainly miss out on certain things and actually following it in a very disciplined way. So, yes, Right. definitely. Moving ahead, what strategies or what has helped you found most that you have found most effective in creating meaningful connections with your peers and mentors while managing your work and education? So again, see, empathy is a big part. But Hmm. secondly, also, so how to utilize your time. Say 5 मिनट का चाय ब्रेक मिला है, I'm Hmm. meeting someone outside. मैं ऑफिस की बात नहीं करूंगा. I'll just ask which movie you have watched recently. Yeah, Hmm. who are there in your family. Knowing that person, it kind of makes you connect to them, even even if you become ex-colleagues. you know. so Correct. so I think वो 5 मिनट हम ऐसे यूटिलाइज करें तो it's much better to have the right connections, right? Correct. Correct. Yes, I totally agree with you on that. Asking Also, one questions. last Yes. thing is, Yes. Yes. people are always helpful. मैंने नोटिस किया है कि नेटवर्क में इफ यू आर आस्किंग जॉब है क्या, पीपल विल ऑलवेज हेल्प, बट उसके लिए यू नीड टू मेक दोस कनेक्शन. सो Correct. So, Hardik, how has your approach to learning evolved since you started studying while learning? So, any unconventional methods that you've discovered to excel at both that you would like to share with your peers? नॉट रियली. इट्स द सेम के Hmm. टाइम टेबल बनाना है, एंड Scheduling. अगर आप पैशनेट हो अगर आप कोई चीज के बारे में, तो Hmm. यू जस्ट फॉलो दैट पैशन. एंड जरूरी नहीं कि वो पैशन से अर्न करना है. मे बी आपको एक, लाइक आई हैव अ फ्रेंड जिसको मैक्रे में बनाना अच्छा लगता है, राइट? Hmm. तो शी डज द एंटायर डे जॉब, रात को आधा घंटा मैक्रे में करती, बिकॉज दैट इज हर पैशन, एंड इट Hmm. हेल्प्स हर टू कूल डाउन एंड टेक द स्ट्रेस अवे फ्रॉम द डेली रूटीन. तो Correct. आई थिंक ये चीजें ढूंढना बहुत जरूरी है लाइफ में. Correct. Correct. So, my last question to you that I would like you to share with your peers, our learners, is that your vision for the next 5 to 10 years. Like, since you have had mentioned earlier that you envision becoming a successful marketing consultant and releasing an album
with your band as well. So how do you plan to balance these ambitions with your personal goals? And like, what is your overall vision for the next years? Okay, the three key things, like you said, एक, I want to become a successful marketing consultant. Correct. Second is मेरे बैंड का एल्बम आ रहा है this year, Hmm. so we are working towards that. Hmm. And third is of course improving my health, क्योंकि Hmm. I am restricted because of my health in a lot of things. Okay. I don't go to offices. I only prefer work from home, or taking, because traveling is not too easy for me. तो वो एक improve करना है, so that next 5 to 10 years I can start traveling a lot. Hmm. Because traveling will help me to do work as well as perform shows. So Correct. so health is definitely the priority, and I would actually appeal to everyone that health को कभी भी neglect मत करना, because that is going to hamper your future. हम सोचते हैं फ्यूचर के लिए अभी पुश कर लेते हैं, बट वो फ्यूचर में वो हैम्पर कर देता है. सो yeah. So for building that itself, so Hmm. I joined marketing management with the reason that I have on hand training on branding and marketing, Hmm. but having a degree in it is also very important. And I like challenges, so consulting new upcoming brands, or startups. So Hmm. I already, right, currently I'm managing two brands who are just started up. So that kind of pushes me a lot. It's exciting. So my Great. plan is to do that itself for the next 10 Hmm. years, only for the beginners, so it's fun to work. Yes, the point that you had shared, that health is definitely the most important thing. Health is wealth. That definitely, I am sure everyone resonates with you. And all the best for your vision that you have for Thank you. your the next 5 to 10 years. So thank you, Hardik, for sharing your thoughts. I'm sure everyone here is like gotten to know you better now. Now it's time for you to dive deeper into today's theme. I'm sure everyone like me is looking forward to getting to know the topic better, which is Okay, why do we sure. fall master brews. Yeah. All Yes. right. I'll just, Yes, please share the screen. yeah. Uh, is my screen visible to everyone? Yes, it is, Hardik. Yeah. Okay. So, of course, you know, ये तो पता चल गया होगा कि I'm a big superhero buff, and like, I think not from the movie era but from the comics era. And हम लोगों ने सबने पढ़ी होगी कुछ ना कुछ, तो that is the topic, like we discussed, why do we fall. And first of the things, of course, वो dialogue यहाँ से लिया है, तो I always wanted to acknowledge के Batman Begins में था वो. And the answer is so that we can learn to pick ourselves up. So हर failure के पीछे there is a meaning, and हम उससे कुछ सीख के आगे बढ़ सकते हैं. So let's go to the first point, is understanding the purpose of failure. Also, I would like to say that wherever, if you guys feel you want to discuss, you can always ping on the chat or something. But I think failure हम सब ने महसूस किया है. Correct? I mean, it's something that हम सब के साथ कहीं ना कहीं हुआ है. स्कूल में, कॉलेज में, वर्क में, इट ऑलवेज हैपेंस. बट हम कभी कभी वो फेलियर से मायूस हो जाते हैं. वी आर सो सैड अबाउट इट दैट वी फॉरगेट व्हाई दैट फेलियर हैपेंड. One of the most important things as a human being is to accept that we are also a reason for failure, and to learn how to improve on it. Okay? So failure is a mentor, not an advisor. All right. So what I would like is, if you guys have a piece of paper and pen, you write down your recent failure, and just write it down, and then आगे हम जाएंगे तब we'll work on it together. So I'll give you 2 minutes to write it down, if it's available to you, or laptop पे कहीं पे भी आप लिख लीजिए. कोई भी छोटा फेलियर ले लीजिए या बड़ा फेलियर, डिपेंड्स.
So I'll give a minute, ma'am, to them to, Yes, yeah, please go ahead. because I want to keep this interactive, तो Yes, मजा भी please. आएगा. And because Definitely. guys, मैं मतलब I'm not giving a seminar or something. I'm just like you, and I think we all have our stories to tell, and this is how we can discuss those. Right? Definitely. Definitely. In fact, I encourage everyone present here to share it on the chat. Even that would be Yeah, great. If you're comfortable, please share it on the chat. correct. Yeah, if it's We're taking a Learners, moment over here. kindly raise your hand to get unmuted. Yes, if you want to share it while like talking, if you want to unmute, you can also unmute. Otherwise, you can share it on the chat as well. Yash has already shared on chat. okay. Uh, Komal is saying my voice is breaking. Is it fine now? Or Yes, you're audible. yeah, It's audible. okay. Right. Yeah, these got it. So mostly here, I think everybody's thinking about failure from a point of view के job related. Yeah, ठीक है. See, in those factors, there are a lot of things that doesn't depend on you only, right? But यहाँ पे भी we can, think about things as we go. So, but failure can lead to change, right? Business and struggle actually goes hand in hand. And correct, right. There are a couple of Shiv Shankar, there are a lot of बहुत सारे लोग बोलते हैं 21 days लगते हैं to inculcate a habit. I don't know how true it is, but I think every night before you sleep, आप दूसरा दिन प्लान कर लो माइंड में कि ये करना ही है. योर माइंड विल वर्क ऑटोमेटिकली. मतलब अगर मैं खुद को बोलता हूँ मुझे उठना ही है जल्दी, वो अपने आप हो जाता है. संध्या, या that is one of the things that parental support is the most important thing. But if there is no support inwards, there's always support outwards. There are friends, there are family members, other family members. So correct. So see, यहाँ पे if I see a lot of people have this struggle के conversations नहीं हो रहा है या जॉब में सिलेक्शन नहीं हो रहा है, डिसिप्लिन का इशू है. नाउ ये अपना फेलियर है लाइफ में. इससे क्या होगा? करेक्ट. राइट प्रदीप जी. राइट. कंफर्ट जोन में आना इज द वर्स्ट थिंग टू डू. राइट. आई थिंक ये सारे फेलियर जो है, ये एक चेंज क्रिएट करना चाहते हैं. जो हम क्या सोचते हैं कि ये हो गया, उसके आगे क्या. यस. सो अभी जैसे आप बोल रहे हो प्रोडक्ट का नॉलेज का इशू था, आई थिंक प्रदीप जी का. मे बी यू कैन पुट दैट एफर्ट के वो हम वापस सीख ले, एंड यू बिकम कॉन्फिडेंट इन इट. Shreya, you can, I think last though boot camps were amazing. Mr. Jagdish was there to, teach us a little about communication वगैरह. So use those things to, start conversing with people. Shreya, best way करना है अपने friends के साथ conversations करो. Play mock interviews with them. Like there is nothing more, fun than doing that, right? लीडरशिप स्किल्स चाहिए आईपैड को. सॉरी, द नेम इज आईपैड. बट या, लीडरशिप स्किल्स के लिए ऑफ कोर्स देन आप यहाँ पढ़ रहे हो. व्हाट मोर डू यू वांट, यू विल लर्न इट फ्रॉम हियर. बट अब यहाँ पे एक्सेप्टेंस की बात है, राइट? सो नाउ फर्स्ट आई वांट यू टू डू अ स्मॉल प्रैक्टिस दैट ये फेलियर जो है आपने, राइट,
Most of them have communication skills. Correct. ये जो चीज है, इसको आप एक टाइमलाइन में डिवाइड कर दो. आपका जो आज का फेलियर है, वो कल आपको कैसे अफेक्ट करेगा, नेक्स्ट वीक कैसे करेगा, नेक्स्ट मंथ कैसे करेगा, नेक्स्ट ईयर कैसे करेगा, और 5 साल बाद. जैसे आज कम्युनिकेशन का इशू है मुझे, नेक्स्ट वीक भी होगा, नेक्स्ट मंथ भी होगा, नेक्स्ट ईयर भी होगा, आगे भी होगा. बट अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कब चेंज ला सकता हूं. तो मैं कल अगर मुझे ये इशू आने वाला है, मैं ट्राई करूंगा कि नेक्स्ट वीक मुझे कम्युनिकेशन का इशू ना आए. इसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा. इसके लिए आज यूट्यूब पे देर आर सो मेनी वीडियोस अवेलेबल टू फ्रीली के आप सीख सकते हैं बहुत सारी चीजें. आप यहाँ पे हैं, यहाँ पे बूट कैंप के रिकॉर्डिंग्स वापस देख सकते हैं. एवरी टाइम अगर नेक्स्ट वीक नहीं हुआ, डोंट गिव अप. नेक्स्ट मंथ नहीं होना चाहिए, राइट? So you have to look at how the failure will affect the next, right? Yeah, we don't say tomorrow. This is not in that context. Tomorrow means आज का failure कल कैसे affect करेगा. तो अगर आप आज ही उस पे वर्क करते हैं तो कल नहीं affect करेगा वो. So ये एक हमेशा टाइमलाइन याद रखिए, एंड डोंट गिव अप. मतलब नेक्स्ट वीक नहीं अफेक्ट हो रहा है फिर भी, तो ऐसा नहीं छोड़ दो, अब ये नहीं है अपने काम का. Try that next month वो affect ना हो. And you can note it down. You can write. Yes, consistency is the key. You can write it down कि मुझे, आप बोर्ड ले लीजिए, स्टिकी नोट्स ले लीजिए. ये मुझे बहुत फनी लगता था पहले व्हेन आई वाज यंगर कि वो स्टिकी नोट्स लगाते हैं लोग या बोर्ड यूज करते हैं. बट अब एक्चुअली वो काफी इफेक्टिव लगता है कि आई कैन राइट द गोल्स एंड जस्ट टिक मार्क देयर कि हाँ मैंने ये अचीव कर लिया है करके. सो ए इज, ये चीज को आप फॉलो करिए. विजुअलाइज कीजिए आपका फेलियर, और कैसे आप इसको कैसे आप इम्प्रूव करोगे, कहाँ कहाँ पे. अब जैसे छोटा फेलियर है, जैसे इंटरव्यू में नहीं क्लियर हुए, तो हम वो सब सीखेंगे जो इंटरव्यू में पूछा गया, जो शायद आई डिड नॉट लर्न और डिड नॉट नो अबाउट. आई लर्न दैट, सो नेक्स्ट वीक आई कैन गिव अ बेटर इंटरव्यू. बट से द फेलियर इज अबाउट बिजनेस, राइट? The learning might be a longer for a longer period. So I might try that next month ये चीज ना हो, and next year ये चीज ना हो. करेक्ट. तो इसमें खुद को, और खुद को कभी पुश मत करना डाउन. इट्स ओके टू गो एट योर ओन पेस, बट जस्ट मेक श्योर दैट यू डोंट गिव अप. एक दिन कुछ नहीं करना है वो भी चले, बट कीप these things in mind. I hope this is fine. Okay, there. Correct, I think. So another thing here is how to break down failure. Now यहाँ पे we can try कि हमने जो जो failure लिखे हैं उसको कैसे break down करेंगे. So analyze, adapt and grow, like the key things. So A is acceptance. Acceptance is the most important thing, जहाँ पे we generally sometimes we don't want to, like बहुत बार होता था कि हम स्कूल में पेपर दे के आते थे, एंड वी यूज्ड टू से चांस ही नहीं मुझे इतने कम मार्क मिले, आई हैव रिटन एवरीथिंग परफेक्टली. बट एक्चुअली व्हेन द पेपर्स आर शोन, यू रियलाइज, ओ माय गॉड, आई मेड सो मेनी मिस्टेक्स. सो दैट एक्सेप्टेंस दैट समथिंग इज लैकिंग इन मी. सी, सराउंडिंग्स, अदर थिंग्स कैन अफेक्ट. ठीक है, आई अंडरस्टैंड. जॉब में कहीं पे पार्शियलिटी होती है, कहीं पे लक काम करता है. वो चीजों में यू कैन नॉट डू मच. बट इफ इट्स स्किल बेस्ड, के ये स्किल लैकिंग था, तो वो एक्सेप्टेंस हमें करना जरूरी. और वो लिख लीजिए, दैट इज द टॉप थिंग दैट यू नीड टू वर्क. सिंस वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस हर चीज में होना चाहिए, लाइफ में भी होना चाहिए. यू नो जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, तो यहाँ पे लोकल ट्रेन, किसी ने अगर ट्रैवल किया हो तो पता होगा. तो जब एक ट्रेन चली जाती है, वो लॉट ऑफ पीपल ना वो चिल्लम चिल्ली करने लगते हैं, अरे यार गया ट्रेन, आता काय करायचं. वो इधर उधर गाली देते रहते हैं. जब तक
और 3 मिनट में नेक्स्ट ट्रेन आती। सो इधर यू एक्सेप्ट दैट ट्रेन चली गई, 3 मिनट में दूसरी ट्रेन आएगी, या फिर यू बर्न योर ओन ब्लड एंड बॉइल योर ओन ब्लड टू कर्स इट। सो एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस के बाद आस्क व्हाई। सो नाउ हमें पता चल रहा है कि ठीक है कि मैंने शायद कम्युनिकेशन में गड़बड़ की, मैं जो कहना चाह रहा था इंटरव्यूअर को शायद वो समझ नहीं पड़ा। करेक्ट। क्यों नहीं समझ पड़ा? मे बी द वे आई एम टॉकिंग या मेरा लैंग्वेज माइट बी एन इशू। सी, अगेन आई कंसिडर लैंग्वेज एक सिर्फ मीडियम है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड इज कॉन्फिडेंस टू टॉक। ग्रामर अपनी जगह है, लैंग्वेज अपनी जगह है, बट व्हेन यू हैव कॉन्फिडेंस टू टॉक टू समवन, वहीं पे यू हैव स्कोर्ड हाफ ऑफ द मार्क्स। सो लॉट ऑफ टाइम्स इंटरव्यूअर के सामने हम ऑलरेडी सोच लेते हैं अरे मैं बात नहीं कर सकता, वहीं पे हम गड़बड़ कर देते। फर्स्ट तो सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना है कि ओके आई कैन टॉक, एंड देन नाउ अगर मैंने गड़बड़ की थी लास्ट टाइम, किस चीज में गड़बड़ की थी? वॉज इट स्किल बेस्ड, वॉज इट कम्युनिकेशन बेस्ड? तो मैं वो चीज लिख के प्रैक्टिस करूंगा। हम क्या करते हैं, इंटरव्यू हो गया भूल जाते, गया वो टाइम, मतलब, और या तो उसके बारे में क्रिप करते हैं एंड फिर नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए वेट करते हैं। लेट्स कीप प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट इंटरव्यूज। आई नो गेटिंग जॉब्स आर डिफिकल्ट, इट्स नॉट इजी। मुझे अभी बोलने में बहुत इजी लग रहा है, बट इट इज नॉट इजी। बट learning is not difficult, right? So you can always learn. So that's why the third point or the third segment of failure, like the final पड़ाव जो है उसका, वो लर्निंग है। एक्सेप्ट कर लिया, समझ गए क्यों हुआ, अब लर्निंग करना है। अब लर्निंग भी बहुत बार हम बोलते हैं कि टाइम नहीं है। एक्चुअली टाइम है, ज्यादा टाइम नहीं निकालना है। स्टार्ट विथ 5 मिनट्स, पुश इट टू 10 मिनट्स, पुश इट टू 15 मिनट्स। आज मूवी देखने के लिए हम सब देख लेते हैं, ओटीटी पे सीरीज बिंज वॉच कर लेते हैं, बट एट द सेम टाइम उसमें से, एंड मैं ये नहीं बोल रहा हूँ मत करो, मैं भी देखता हूँ, बट टेक like say 10 minutes out of it or 15 minutes out of it and utilize it here. So that will help you to take the next step forward. And then आप खुद कंपेयर करना ये चार्ट के हिसाब से कि आप अब कहाँ पे हो, ये चीजें ऐड करके। तो मैंने सोचा कि लाइक लेट्स टेक 2 एग्जांपल्स फ्रॉम माय प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ्स। एंड जैसे ऑलरेडी बताया कि मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड चालू की थी फ्रेंड्स के साथ मिलके। सारे लोग क्रिएटिव थे, फाइनेंस का किसी को अक्कल नहीं था, सबने अपने अपने पैसे डाले, हमने मस्त जगह लिया, स्टूडियो सेटअप किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैड टू एक्सेप्ट दैट 3 साल बाद अब हमारे पास ना पैसे हैं, ना लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स है, जिससे हमें अब शट डाउन करना है। दैट वाज अ बिग एक्सेप्टेंस बिकॉज देयर इज अ पार्ट ऑफ ईगो आल्सो दैट एड्स अप कि आई एम अ बिजनेस ओनर नाउ, मैं कैसे मेरी कंपनी बंद कर दूं? दैट एक्सेप्टेंस हैड टू कम। तो वो शट डाउन किया कंपनी को, वो एक्सेप्ट किया। क्यों हुआ ये? दो चीजें थी, एक मार्केट कंडीशन था, उस पे मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। बट इफ आई हैड समवन हैविंग फाइनेंशियल प्रोवेस, या वन ऑफ अस वुड बी मोर इनटू मैनेजमेंट, हम शायद स्मार्टली हमारे यूटिलाइज कर सकते सारे रिसोर्सेस को, जो हमने तब नहीं सोचा। So that was the why, right? So the learning, of course, there was handling the creative direction and team building. But another thing that I learned is मुझे अब इसमें improve होना है, leadership skills में, management में, and also marketing में। See, product बना लिया हमने, we made our animated, original animated series का पूरा package, but उसे market कैसे करें? I can go and pitch the story, लेकिन उसे market करने वाला कोई नहीं था। सो वो लैकिंग था। तो दैट इज व्हाई अनदर थिंग इज आई एम हियर टू लर्न दैट पर्टिकुलर थिंग के ठीक है अब ये भी सीख लेंगे थोड़ा सा। सेकेंड एग्जांपल इज ऑफ कोर्स, जैसे बोला, हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, इट्स अ लंग कंडीशन। तो 28% चला गया था लंग्स, और अब 46 पे है। तो ऑफ कोर्स बहुत बड़ा सेटबैक था, बिकॉज सडनली लाइफ ऐसे रुक जाती है, बिकॉज यू कांट डू एनीथिंग।
5 मिनट वॉक भी अलाउड नहीं था। तो बट वो उससे मैंने ये सीखा कि थोड़ा लाइफ में स्लो डाउन होना है। मे बी आई एम गोइंग सो फास्ट, 7 days a week आई एम लर्निंग समथिंग, म्यूजिक करने जा रहा हूँ, मैं ब्रेक ही नहीं लेता था। सडनली उतना बड़ा ब्रेक आ गया कि I learned कि okay, I can also, I need to breathe. Breathe means not the regular, but giving yourself some space, your mind some space, just looking at nature. I mean, half an hour भी आप अगर बाहर देखते हो ग्रीनरी में, that also can freshen you up. I think बहुत लोग रात को वॉक करने जाते हैं। Why? Because psychologically it helps you freshen up. सो वो एक चीज सीखी। दूसरा ये समझा कि अब सांस ही नहीं ले पा रहा हूँ डीप, तो गाना कैसे गाऊंगा। तो वी हैड सम सॉन्ग्स फ्रॉम सारेगामा एंड कवर्स थे जो हम नहीं कर पाए बिकॉज आई कुडंट सिंग। बट अब हम लोग ओरिजिनल सॉन्ग्स करते हैं, तो ना ओरिजिनल सॉन्ग्स आर रिटन बाय मी, परफॉर्म बाय मी। सो व्हाट हैपेंस इज उसका वोकल आई कैन एडजस्ट एज पर माई रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे आई लर्न दैट मे बी वो अच्छा आउटकम था, बिकॉज अब हम जाके उसको एल्बम में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर मैं शायद सिर्फ कवर्स ही करते रहता अभी तक। तो दिस वाज वन ऑफ द अदर थिंग्स। तो यू कैन ऑल्सो थिंक कि इस तरह से आपको, आई जस्ट ओपन द चैट। या अविनाश, या एब्सोल्युटली राइट, पॉजिटिव। सी, आई विल नॉट से स्टे पॉजिटिव, स्टे फोकस्ड, क्योंकि पॉजिटिव हमेशा रहना नहीं है पॉसिबल। लाइक बहुत बार हम लोग बोल देते हैं यार, लेट्स बी पॉजिटिव ऑफ अ सिचुएशन, सिचुएशंस आर देयर, वो नेगेटिविटी लाएगी। की है कि वो नेगेटिविटी को रहने मत दो। आज मुझे सैड फील हो रहा है, ठीक है, आई लेट माई सेल्फ फील दैट। कल, परसों, आई हैव टू बाउंस बैक। सो आई थिंक स्टे पॉजिटिव के बदले जस्ट वन चेंज इज स्टे फोकस्ड, दैट्स इट। And yeah, like you said, focus on progress, not perfection, right? So again, so building resilience through change. So of course, your failure leads to change. Now, आपको इतनी हिम्मत लानी है, रेजिलियंस लाना है कि यू कैन चेंज थिंग्स। बट उसके लिए ना, देर आर कपल ऑफ थिंग्स दैट आई थॉट इट वर्क फॉर मी। आई मीन, आपके पास भी काफी पॉइंट्स होंगे जो आपको लगता है कि दैट कैन हेल्प, सो वी कैन ऑलवेज डिस्कस दैट। बट दीज आर 4 की पॉइंट्स दैट I wanted to discuss is, एक है विजन एंड पर्पस, राइट। दो चीज होती है कि विजन और पर्पस, एक्चुअली नाउ तो स्क्रीन पे है, नहीं तो मैं पूछता कि विजन क्या है, पर्पस क्या है। बट विजन इज योर डिफाइंड गोल्स फॉर फ्यूचर एंड पर्पस इज व्हाई यू आर ड्रिवन। तो आप में से कोई एक आध एग्जांपल दे सकता है अगर अपने लाइफ का, कि आपका विजन क्या है, आपका पर्पस क्या है, तो इन द चैट क्विकली, देन वी कैन टॉक अबाउट दैट। Yes, learners, please share your answers, your vision, and your purpose in the chat box. करेक्ट, करेक्ट, राइट, Yeah. perfect, yeah. So these are the goals, or provide better life to my family, or buy a bungalow somewhere, and बहुत सारी चीजें। तो वही आपका यू नो विजन है कि मुझे ये पहुंचना है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो, राइट। वो एक स्टेज होता है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन विजन एंड पर्पस, कि राइट पवन, और आप कर पाओगे, डेफिनेटली, आई एम वेरी श्योर। बहुत इजी है करना, वो सोच के ऐसा लगता है बहुत भारी है, बट आई थिंक इंग्लिश सबसे इजी है। हमारी मातृभाषा एक्चुअली डिफिकल्ट है बोलने में, इवन लिखने में, फॉर एग्जाम्पल। सो या, तो एक ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है, आप अपने लिए ये डिफाइन कर। करेक्ट समर, या। सो आई थिंक हम सबको काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि विजन एंड पर्पस क्या है, लेकिन कहीं ना रोज की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं कि ओ, फैंटास्टिक, न्यू लैंग्वेज सीखना हमेशा इट्स अ वेरी गुड थिंग। इट काइंड ऑफ ओपन्स योर माइंड टुवर्ड्स न्यू थिंग्स, क्योंकि हर लैंग्वेज के साथ
you also learn about that particular region or country, which kind of helps you grow. So एक ये लिख के रखना है कि मेरा विजन क्या है, मेरा पर्पस क्या है, भटकना नहीं. और दैट क्लैरिटी हैज टू बी देयर सिंस द बिगिनिंग. और फिर वो कुछ भी हो, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोंट कंपेयर बिटवीन मी एंड माय काउंटर पार्ट, कि उसका विजन क्या है, मेरा विजन क्या है, दोनों का अलग हो सकता है. करेक्ट. सी, टू बी अ वीपी, ट्रैवल विथ माय, यस, चिल्ड्रन फ्यूचर सिक्योर, राइट. करेक्ट. सो ये बहुत जरूरी है. एंड वो ड्राइविंग फैक्टर है. आप हमेशा पुश करोगे खुद को ये करने के लिए. एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्गर इन टुडेज टाइम, आदित्य, आई थिंक it's one of the key things to have. I'm with you there. Okay. Second है adaptability. Abhi, like I have written, be like water. Correct. Be like water means, why is simple is water. आप ओशन में भी देखते हो, ग्लास में भी भर सकते हो, कोई भी शेप में आप उसको डाल के रख सकते हो. सो वाटर इज अडेप्टेबल. At the same time, water itself is so powerful. It can dissolve mountains, right? I mean, so be like water adaptability के लिए. तो adaptability क्या है? It's just that आजकल क्या चल रहा है मार्केट में. हम क्लोथिंग में देखते हैं ना, मिंत्रा पे जाते हैं तो अरे ये नया फैशन चल रहा है, ये नए टाइप के सनग्लासेस आ रहे हैं, हमें वो ट्रेंड पता है. तो एक ये भी देखना है कि इंडस्ट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है. So maybe you can follow some key people on LinkedIn. LinkedIn पे काफी लोग हैं जो speakers हैं, which are always giving news about industry. तो एक वो ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर peers के साथ डिस्कस कर सकते हैं. अरे तूने सुना क्या वो चैट जीपीटी के बारे में. That is how I actually found out chat GPT couple of years back. Someone came and told me, अरे तू चैट जीपीटी देखा क्या. So that kind of वो ट्रेंड्स अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. So you need to start learning what are trends. और वो कैसे सीख सकते हो? By creating a network. आप नेटवर्क क्रिएट करोगे तो जाके आप ट्रेंड्स को जान पाओगे. या इंटरनेट तो है ही, बट ऑलवेज लर्निंग फ्रॉम योर पीयर्स विल बी मोर प्रैक्टिकल देन व्हाट यू विल लर्न ऑन द इंटरनेट. तो दोनों इंपॉर्टेंट है, बट या स्टे अपडेटेड. एंड हम लोग काफी बार ये देखते हैं कि वो कंपनी में कितना सैलरी मिल रहा है उसको, ये कंपनी में इतना सैलरी मिल रहा है, तो आई शुड ट्राई. बट वो ट्राई करने के लिए मुझे क्या करना होगा? व्हाट इफ आई लर्न द न्यू टूल? आई विल मैंने अभी बीच में एक एआई यूज करके एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी. तो वो टूल्स सीख के आई थॉट मे बी मुझे कंटेंट एंड स्टोरी टेलिंग में आई कैन गो अहेड, बिकॉज इट वाज एब्सोल्युटली अ न्यू टूल. And so it kind of helped me land a project. So the thing is, if we are looking to grow, तो ग्रोथ टूल्स में भी करना है, लर्निंग में भी करना है, सिर्फ और फाइनेंशियली तो ही ग्रोथ होगी. करेक्ट. सो आई होप आई एम नॉट बोरिंग एनीवन. इट या. सो दिस इज द की, दिस इज वन ऑफ द की फैक्टर्स, कोलैबोरेशन एंड एम्पैथी. बहुत बार होता है लोग काम नहीं करते, अपनी टीम में काम नहीं करते. एंड आई हैव सीन पीपल हु वुड यू नो थैंक यू एवरीवन. सो कोलैबोरेशन में क्या हो जाता है कि हम ना, वी हैव अ लॉट ऑफ हम जज बहुत करने लगते हैं इजीली लोगों को. वो छोड़ दो, काम करते वक्त वो छोड़ दो. रहते हैं लोग जो बहुत कम काम करते हैं, और कुछ लोग पूरा टाइम काम करते रहते हैं, राइट. तो वो कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर आप कैसे करोगे? स्टार्ट टेक्नोलॉजी. एज अ लीडर और एज अ पीयर एक्नॉलेज करिए. आप समझ, एम्पैथी मीन्स काइंडनेस, थोड़ा थोड़ा ह्यूमन टच या ह्यूमन, तो उनका इमोशन समझना थोड़ा. ये सिर्फ मतलब हाउ तृप्ति मैम, कैन यू हेल्प हियर प्लीज? Yes, what has he asked?
empathy Empathy. means. Yeah, Empathy actually is all about knowing yourself and knowing how you have to, share, know the other person's emotions as well, and how you can react to them in a better way. That is empathy. You have to be in that person's shoes in order to understand what he's going through, and it's very different from sympathy. right, correct. Yes. So तो पहले तो एक्नॉलेजमेंट इतना इम्पोर्टेंट है कि कोई भी अगर छोटा भी अच्छा काम करे, हम हमें ही ले लो, लाइक बॉस सेंड्स अस एन ईमेल, गुड वर्क, वी फील प्राउड, राइट? So that acknowledgement has to be with the peers also. I can say, "अरे भाई तूने सही काम किया, thanks, it really helped me." Sorry, my Hindi is little Bombaya Hindi, but so you can start with acknowledgement. And जैसे हमने पहले बात की कि समझो कि सामने वाला भी क्या going through, that person is going through. तो एक कोलैबोरेटिव एटमॉस्फेयर आप बनाओगे, तो ऐसे लोग जो काम नहीं भी करते वो भी थोड़ा काम करके जाएंगे आपका। एंड ऐसे होते, आई अग्री, मतलब ऐसा नहीं है कि एवरीबॉडी लव्स टू वर्क, यू नो पीपल आर देयर टू कट कॉर्नर्स, बट एंड सेकंड, एम्पैथिक लिसनिंग। ये आई थिंक लास्ट वीक हमने पढ़ा भी था बॉनी मैम के लेक्चर में, दैट एम्पैथिक लिसनिंग इज जहाँ पे आप सुन के समझ भी रहे उनके इमोशंस। एज अ लीडर ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि कभी कभी ना बॉडी लैंग्वेज भी समझ पड़ती थी। अब हमारा स्टूडियो कैसा था, एक बड़ा सा रूम था, स्टूडियो छोटा था लेकिन एक ही रूम, उसमें कोई कैबिन कुछ नहीं, मैं भी साथ में ही बैठता था उनके। तो उनके बॉडी लैंग्वेज से या जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उससे काफी चीजें पता चलती थी। अब होता क्या है, आई कैन लेट देम बी, बट आस्किंग देम कि क्या हुआ है, इट हेल्प्स मी टू मेक श्योर दैट दे कैन परफॉर्म वेल हियर, राइट? ऐसा भी होता है कि किसी के घर पे कुछ इमरजेंसी, नाउ इफ पियर्स में भी एम्पैथिक लिसनिंग हो तो उसका लोड शेयर हो सकता है, एंड दैट सेम थिंग कैन हेल्प यू आल्सो इन द फ्यूचर। तो एक ये चीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक, एंड इट डजंट टेक मच टाइम। जैसे मैंने बोला, चाय पे बस बात कर लो, इट्स इनफ। क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी, ये इमेज मैंने योगा का डाला है, आई एम नॉट आस्किंग यू टू डू योगा, ऑल्दो योगा इज गुड। सो एक ये है कि हम जब व्हेन वी वर चिल्ड्रन, आई थिंक वी ऑल वर क्रिएटिव, कुछ ना कुछ हम करते थे, राइट? कोई ड्राइंग करता था, कोई कॉमिक पढ़ता था, कोई गाना गाता था। अभी सो ये चीज हम कहीं ना कहीं छोड़ दिया है हमने, वी हैव लेफ्ट देम बिहाइंड। व्हाई? बिकॉज जॉब है, घर पे इतना सारा ये है, आई हैव टू पे माई बिल्स, आई हैव टू पे माई EMI, वी आर लेटिंग गो ऑफ दैट क्रिएटिविटी। एंड लाइक आई सेड, माई फ्रेंड वो मैक्रे में करती, आपको क्रिएटिविटी के लिए पूरा दिन नहीं चाहिए, 5 मिनट चाहिए, 10 मिनट चाहिए, 15 मिनट चाहिए, जो आपको खुशी दे सके। मैं गारंटी देता हूँ, आज अगर आप कोई कलरिंग बुक लेके बैठे, अडल्ट कलरिंग बुक आती है मंडाला आर्ट्स की, अगर आपको पता हो तो, एंड इट्स अमेजिंग। आपको कलर करेंगे ना, एंड में देयर विल बी अ सेटिस्फैक्शन। वो चीज, इट्स काइंड ऑफ अ पैसिव मेडिटेशन, इट काइंड ऑफ हेल्प्स यू ईज। या फिर यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग टू डू विद द रिलीजन पार्ट, इट्स लिसनिंग टू योर माइंड एंड योर बॉडी, के माई माइंड सेज आज मुझे स्ट्रेस नहीं लेना, या बॉडी सेज आज मुझसे ये नहीं होगा। समटाइम्स लिसन, आई नो फिर बॉस बोलेगा आना जरूरी है तो जाना पड़ता है, बट जहाँ कर सकते हो टू लिसन टू योर सेल्फ, प्लीज डू इट। लाइक आई सेड, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपका नी पेन हो रहा है रोज और आप उसको डिले कर रहे हो, कल उठ के वो और कुछ मेजर लिगामेंट टेयर हो सकता है, करेक्ट? सो ऑलवेज थिंक दैट जिस वक्त हुआ है उसको आप फिक्स कर लो। तो दैट, एंड मेडिटेटिव इज, अभी क्रिएटिविटी में लाइक माय पैसिव मेडिटेशन इज कुकिंग। मैं सुबह 1 घंटा मैंने खाना बनाने के लिए रखा है, और मुझे बहुत मजा आता है वो खाना जब मैं बनाता हूँ, आम लाइक, और मैं उसमें कोई पैशन फॉलो नहीं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं कोई शेफ बनना है या कुछ, बट इट काइंड ऑफ हेल्प्स मी टू फील सो कंफर्टेबल एंड काम कि मैं अपना डे स्टार्ट कर सकता हूँ।
आप सेम चीज रात को भी कर सकते हो, बट ट्राई टू फाइंड व्हाट यू लव। एंड आई एम श्योर हम सबको पता है हम लोग क्या पसंद है। कुछ नहीं तो यार वी कैन रीड, कुछ पढ़ना चालू कीजिए, लॉट ऑफ थिंग्स टू रीड। आज तो ऑडियो बुक्स भी आती है, जस्ट लिसन टू ऑडियो बुक्स। ट्रैवलिंग में कितना टाइम मिलता है हमें, राइट? आई थिंक यहाँ पे तो व्हेन वी ट्रैवल तो हमें एक एक घंटा मिनिमम लगता ही है, बाय रोड बाय ट्रेन एनीथिंग। तो वो एक घंटा कैसे यूटिलाइज करना है वो आप डिसाइड कर सकते हैं, राइट? या तो माइंडलेसली रील्स देखिए, आई एम नॉट अगेंस्ट वॉचिंग रील्स, बट वो डूम स्क्रोलिंग बोलते हैं उसे, कि आप देखते ही जाते हो रील्स को। कहीं ना कहीं वो स्टॉप करके अपने लिए कुछ कीजिए। दैट्स द ओनली की दैट आई वुड सजेस्ट। Of course, you want to join yoga, you want to join a gym. A lot of people, guys especially, I think, वो जिम एक यंगर एज में एक पैशन रहता था, बट वो छूट जाता है कि अभी किधर टाइम मिलता है, राइट? एंड देर आर सो मेनी फ्रेंड्स आई हैव हियर दैट दे स्टिल गो टू द जिम। कुछ भी हो, सुबह 6 बजे जाते ही है, एंड दे वर्क डे एंड नाइट। कपल ऑफ देम आर इन पुलिस, तो उनको करना पड़ता है, बट कपल ऑफ देम आर इन रेगुलर सर्विस, वो भी जाते हैं। तो यू हैव टू पुश योरसेल्फ कहीं ना कहीं, एंड गेट प्लीज गेट गुड स्लीप। 6 to 8 hours ऑफ स्लीप, वेरी इंपॉर्टेंट। रात को बैठ के हम बहुत बार ओटीटी वगैरह देख लेते, फिर दूसरे दिन जाके हम ऑफिस को गाली देते हैं, अरे यार ये काम, बिकॉज वी आर नॉट फ्रेश। ऑलवेज गो फ्रेश वेन एवर यू गो। आई थिंक I'm coming to the end of the session in way that एक थोड़ी बातें करते हैं डूज एंड डोंट्स के बारे में, राइट? टिल नाउ किसी को कुछ डिस्कस करना है अबाउट क्रिएटिविटी, स्पिरिचुअलिटी? किसी को पर्टिकुलर किसी की क्रिएटिविटी है जो आप नहीं कर रहे हो अभी और सोच रहे हो कि अब चालू कर सकते हैं, तो प्लीज शेयर इट। Yes, students, please share. Please go ahead and share your creativity story. We'd like to see you all talking. I really like what admin has said here, and I think the username admin. So, you know, Mhm. avoiding fantasy and being more practical, Mhm. which is like accepting and then, working on it. See, Mhm. sketching, gym. I'm sure ऐसे बहुत passions है। आप उसके बाजू में yes और no भी लिखो कि मैं ये follow कर रहा हूँ या नहीं। See, this, and everybody will have it. I'm telling you 100%. Correct. See, no. Amazing. Correct. See, अब सबका ये चल रहा है कि ओ आई हैव, ये करता हूँ मैं, वो करता हूँ। आप रेगुलरली वो करिए, और जो कर रहे हैं जिसने यस लिखा है, आई गारंटी कि दैट इज सो रिलैक्सिंग फॉर देम। या प्लेइंग गेम्स, स्पोर्ट्स, इट इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स। साइकोलॉजिकली इट सेड दैट प्लेइंग स्पोर्ट्स, सेरोटोनिन अपटेक बढ़ाता है। बेसिकली आप हैप्पी फील करते हो कोई भी स्पोर्ट्स प्ले करके। करेक्ट। नाइस। ओह, समवन does 5K running. Super. See, I mean, ma'am, if you can see, there is like everybody has something or the other. I mean, uh, it's just it's just so overwhelming to see कि इतने लोगों के पास इतनी सारी एबिलिटीज है और इतनी सारी Absolutely. कैपेबिलिटीज है। Absolutely. Also remember that you can do all these things. जब especially when you are low, these things will help you. तो आपको ये करना है। ओके, स्पिरिचुअलिटी पॉइंट नॉट अंडरस्टूड। स्पिरिचुअलिटी में मतलब मैं रिलीजियस या वो मेडिटेटिव एस्पेक्ट पे नहीं बोल रहा था, बट इन टर्म्स ऑफ आपको अपने माइंड और बॉडी की सुनना है, राइट? जब बॉडी थक जाती है, जैसे मैंने बोला, अब नी का इशू हुआ, नी पेन हो रहा है मेरा 3-4 दिन से, आई वुड गेट इट फिक्स्ड। आई वुड डू सम एक्सरसाइजेस। उसको मैं अगर डिले करता रहूंगा तो शायद वो लिगामेंट टेयर हो जाएगा, राइट?
मेरे बैक का इशू हुआ था, डिस्क बल्ज हो गया था क्योंकि मैं डिले कर रहा था उसको, एंड देन अपेरेंटली देन फिर वो 15 डेज ब्रेक लेना पड़ा. तो फॉर मी that is what it is, bringing your mind and body in one place. Of course there are more aspects to spirituality, but then वो ऐसा लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, तो I'll skip that uh, from this session at least. See, someone loves cooking like me. Okay, so now like let's just go through the do's and don'ts. And oh, taking a walk in nature, yeah, I think a lot of people might also go to hike, and they would love to. Um, Chandrasekhar is one of the toughest instruments. Amazing to actually play saxophone. I cannot. I mean, my lungs will give up in the first go. But so doing all these things. First of all, the do's is to stay curious always. Childlike curiosity हम में नहीं रही है. हम जाने देते हैं. Right, Shreya, you want to learn guitar? Stay curious. Start learning it. अगर हम क्यूरियोसिटी रखते हैं तो हम कुछ नया सीख सकते हैं. अगर हम क्यूरियोसिटी नहीं रखेंगे, हम क्यूरियस रहते हैं. आई मीन अगर आप तो पहले हमारे जो घर थे, अभी तो सारे अपार्टमेंट्स बन गए, पहले चॉल सिस्टम्स वगैरह थे, तो क्यूरियोसिटी रहती थी सबको बाजू में क्या चल रहा है. राइट. आई मीन आई नो इट्स अ वेरी फनी एग्जाम्पल, लेकिन वो क्यूरियोसिटी जो रहती थी हम सब फाइंड आउट कर लेते. तो ये सेम क्यूरियोसिटी हम अपनी ग्रोथ के लिए क्यों नहीं डाल सकते. राइट. वी आर समटाइम्स क्यूरियस कि अरे ये एक्टर की शादी इसके साथ हो रही है या इसको डेट कर रहा है. यू आर क्यूरियस, सो दैट मीन्स एबिलिटी है हम में टू बी क्यूरियस. यू जस्ट हैव टू अप्लाई दैट एबिलिटी हियर. राइट. या विशाखा, यू कैन डू दैट. That is good for calming yourself down, definitely. Another is, of course, like we discussed, you have to build a strong network. स्ट्रॉन्ग नेटवर्क आज ही बिल्ड करना चालू कीजिए. एक्नॉलेज पीपल, एंड लिंक्डइन पे यू कैन कनेक्ट विद अ लॉट ऑफ पीपल. सी, आई एम टेलिंग यू दिस. आई माई सेल्फ एम नॉट सो regular on LinkedIn, to be honest, but I plan to change it. One of my goals in 2025 is to be active on LinkedIn, because now I'm not in a job. I'm a freelance brand consultant, so I need to explore opportunities. तो मैं भी एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने की ट्राई करूंगा. आप भी कीजिए. फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स. अब अभी यहाँ पे ही हमने काफी लोगों ने बोला क्यूरियस मीन्स समझ, कुछ जिज्ञासा होती है ना, जान कुछ सीखने की, जो कोई भी नई चीज सीखने की जिज्ञासा, वो क्यूरियोसिटी. सॉफ्ट स्किल्स, अभी हमने बात की, बहुत लोगों को कम्युनिकेशन में इशू हो रहा है. सो उस पे आप फोकस कीजिए. आप यू कैन लर्न दैट. सॉफ्ट स्किल्स में वन ऑफ द की थिंग्स दैट हेल्प मी वाज कि बचपन में बुक्स तो पढ़ता ही था, फिर थोड़े मूवीज देखना चालू की, उसमें जो लैंग्वेज यूज होती थी, और उसके बाद ऑब्वियसली जो आसपास है लोग, उनके साथ कॉन्वर्जेशन कीजिए. एंड लाइक आई सेड, पहले आप लैंग्वेज पे मत फोकस कीजिए. फर्स्ट फोकस ऑन योर कॉन्फिडेंस, कि मैं बात कर सकता हूँ, बात कर सकती हूँ. उसके बाद आप वो लैंग्वेज पे आप वर्क कीजिए, बिकॉज देन एंड ओनली देन आपका सॉफ्ट स्किल्स बढ़ेगा. बहुत लोग होते हैं वो राइटिंग इतना ब्यूटीफुली करते हैं, मतलब आप उनके ग्रामर ये जीरो मिस्टेक, लेकिन बात करते वक्त बात नहीं कर पाते. सो दैट्स व्हाई वो कॉन्फिडेंस नहीं है. इसलिए मैंने बोला दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, हैविंग कॉन्फिडेंस एंड देन प्रोग्रेस इन लैंग्वेज. देन प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेलबींग. आई थिंक ये मैंने तो बहुत I have learned it the hard way, but I will suggest, yeah, Shiv Shankar, meditation is good. It kind of is good for well-being also, क्योंकि आप जब अपना हेल्थ और वेलबींग पे ध्यान देंगे तो ही आप आगे कर पाएंगे. अभी कितने लोगों ने बोला कि मुझे मेरे बच्चों के लिए फ्यूचर सेट करना, लेकिन अगर आप अपनी हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो 10 साल बाद आप काम नहीं कर पाएंगे. कैसे फ्यूचर सेट करेंगे आप? या 5 साल बाद काम नहीं कर पाएंगे. तो यू हैव टू ऑल्सो सी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इज प्रायोरिटाइज योर सेल्फ ऑल्सो. खुद को
हाँ, यहाँ पे ना मतलब आई हैव सीन माय पेरेंट्स, माय डैड, माय मॉम, कि खुद का चल रहा है, चलने दो यार, हाथ दुख रहा है, चलने दो, कोई बात नहीं। बेटे को बुखार हुआ, सर्दी हो गई, तो दौड़ के मुझे ले जाते थे डॉक्टर के पास, तो खुद नहीं करते थे। तो ये चीज छोड़ना चाहिए, हमें खुद का भी ध्यान रखना है। इट्स नॉट बीइंग सेल्फिश, इट्स बीइंग स्मार्ट, कि आप वो फ्यूचर बना सको आगे जाके। कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए वही है कि प्रैक्टिस करना है बहुत। आप लोगों से बात करो, मतलब अ, जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, आप एक टॉपिक ले लो, चलो एक टॉपिक ले लो कि आज कोई मैच थी T20, राइट? तो आप उसके ऊपर एक छोटा सा 4-5 लाइन लिख लीजिए और वो बोलिए किसी को, बताइए किसी को। वैसे भी आप कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं। या आज का जो टॉपिक था उसके बारे में आप कुछ लिख के किसी को बताइए, व्हाट यू लर्न हियर, कैसे पढ़ा, एंड देन स्लोली यू विल बिल्ड कॉन्फिडेंस। दैट इज गोइंग टू हैपन। बट गिव अप नहीं करना है, मतलब आज मैं लड़खड़ा गया बोलते हुए, तो ऐसा नहीं कि मैं बात करना ही बंद कर दूं। आई विल ट्राई अगेन, राइट? एंड देयर आर कपल ऑफ डोंट्स। इज ए इज बिल्ड द लेगो, राइट? ओवर कमिट नहीं करना है। ओवर कमिटमेंट इज द वर्स्ट थिंग। हाँ सर मैं कर लूंगा, अरे हाँ ये कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, आई कैन डू दिस। व्हाट हैपेंस इन ओवर कमिटमेंट इज, ये जो प्रायोरिटाइज हेल्थ एंड वेलबींग है ना, वो चला जाता है। उसमें स्टे क्यूरियोसिटी भी चला जाता है, उसमें स्ट्रॉन्ग नेटवर्क भी चला जाता है, क्योंकि टाइम ही नहीं है। और सॉफ्ट स्किल्स कहाँ से इंप्रूव होगी जब टाइम नहीं है? सो ऑल योर डूज गो अवे इन वाटर इफ यू ओवरकम। नो योर लिमिट्स। हाँ कहीं लगेगा अरे मेरा ग्रोथ रुक जाएगा, बट आपकी जितनी लिमिट है, जितनी कैपेसिटी है, उससे 10% ज्यादा ले सकते हो आप। पुश करो खुद को थोड़ा सा, बट डोंट ओवर कमिट, डोंट ओवरलोड योर सेल्फ कि आप ही परेशान हो जाओ। देन यू विल स्टॉप लविंग द थिंग्स दैट यू आर डूइंग। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स एट वर्क इज, आई नो ये बहुत क्लीशेड है, बट लव द वर्क यू डू। नाउ सपोज मैं जब ब्रांड और कंटेंट हैंडल कर रहा था नाउ फ्लूट्स में, द कंपनी वाज नॉट डूइंग वेल, आई मीन, और सैलरी नहीं बढ़ा रहे थे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स थे जो सब लोग परेशान हो गए थे। बट वो जब ब्रांड स्ट्रैटेजी बनाते थे, आई यूज टू एंजॉय दैट। तो आई यूज टू स्टार्ट माई डे विथ, आई लव दिस एंड आई वॉन्ट टू डू दिस। फिर हम कहीं और ट्राई करेंगे जॉब की, लेकिन एटलीस्ट यू कैन पुश योर सेल्फ टू डू अ लिटिल बेटर एंड लिटिल फील बेटर दैट यू डिड दैट। ओके, ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स है, बॉस ऐसा है, कलीग ऐसा है, बट देन फाइंड योर वेज थ्रू इट। डोंट अंडरवैल्यू रिलेशनशिप्स। सो ऑफ कोर्स ओवर कमिट नहीं करोगे तो you'll be able to play half an hour with your kids. You can, I have 3 cats, so I make sure that I get some time with them to play. वो तो रात को जागते हैं, तो मुझे I have to set my timetable according to them. तो एक रिलेशनशिप को रखना बहुत जरूरी है। मे बी इट्स बिटवीन पियर्स। एक सिंपल हैप्पी बर्थडे टू योर एक्स कॉलीग कैन गो अ लॉन्ग वे। और मैं यहाँ पे ऐसे स्ट्रैटेजी, कनिंग स्ट्रैटेजी नहीं सिखा रहा हूँ कि हाँ मैं इसको भेजूंगा फिर मुझे ये काम आएगा। आई एम सेइंग आउट ऑफ नाइसनेस, काइंडनेस, एम्पैथी, you do these things. You will like it, the other person will like it, and it will help both of you grow, right? And not just career wise but also as a human being, right? Now don't fear taking risks. Of course calculated risks. I'm not saying आज मैं सब छोड़ के कुछ चालू कर दूं जो हमने किया था and we learned the wrong way. But don't fear taking risks in, like, I think the biggest risk we all have taken, and I salute everyone here, is to join here and study while we are working. It is a risk ना। गारंटी नहीं है कि हम पूरा कोर्स खत्म कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, कितनी सारी चीजें बाकी भी देखनी है, बट यू स्टिल डिड दैट, यू टुक दैट रिस्क एंड वी आर हियर। सो वो नहीं करना है, फियर ऑफ टेकिंग रिस्क निकाल दो। छोटी छोटी रिस्क लेना इज गुड। समटाइम्स इट ऑल्सो पुशेज यू, चैलेंजेस यू। मतलब ऐसा लगता है कि चल, और चैलेंज आती है ना तो मजा भी आता है थोड़ा लाइफ में। आई एम नॉट सेइंग चैलेंज मीन्स
बैंक का लोन का लेटर आ गया कि फोरक्लोज हो रहा है, नॉट दैट काइंड ऑफ चैलेंज, बट स्मॉल challenges like आज वी आज कंपनी में नया टूल आ गया सडनली, नाउ देयर इज नो अदर ऑप्शन बट टू लर्न दैट, एंड दैट इज समथिंग दैट आई वुड लव टू डू. या फिर you take the risk to learn another tool while in the same company which is not using that tool. You're taking that risk because शायद कहीं और कंपनी में वो काम आएगा, right? It will be good on your resume. And last but not the least, don't hesitate to ask for help. हम लोग हिचकिचा जाते हैं पूछने में कि स्पेशली मेंटर्स, आपको पता चलेगा किससे हेल्प लेना है किससे नहीं, वो इतना हमें पता चल जाता है कि ऑफिस में. और हेल्प मीन्स व्हाट, लाइक आप ये बता सकते हैं क्या चल रहा है नया, या सिंपल है जॉब अपॉर्चुनिटीज है क्या वहां पे. इफ यू हैव वर्कड विद समवन दे नो योर कैपेबिलिटीज, देन डेफिनेटली हेल्प, बिकॉज दे आल्सो वांट टू वर्क विद सेम काइंड ऑफ पीपल, राइट? तो डोंट हेसिटेट टू टेक हेल्प. एंड फॉर लीडर्स और बिजनेस ओनर्स आई थिंक हेल्प लेना, आजकल बिजनेस कोचेज होते हैं, देर आर मेंटर्स एंड बिजनेस कोचेज जो जिनका डेडिकेटेड काम है टू हेल्प यू बिल्ड अ बिजनेस. तो व्हाई नॉट टेक दैट हेल्प, because उनके पास 40 years 50 years, these are people who were CEOs CTOs and वो 40 साल करके now they are just helping, maybe if they charge a fee, but that is worth the mentorship fee, right? So always go out, reach to people. दो लोग ना बोलेंगे, दो तो हाँ बोलेंगे. So that is one of the things. And so my point will be, whatever we have discussed today, we can just pick ourselves up and start growing again. Yes, thank you so much, Hardik. You had in between, asked whether you are going right or whether we are finding it interesting. So definitely, I was controlling myself for speaking because I could see a lot of interaction on the chat itself. It Correct. it has given you a thumbs up. It has, it was a very thought provoking session. Really Thank you. interesting session. So this was actually a very relatable session, to say the least, with all the things that you have gotten you through in your own personal experiences. It's definitely has proven to be inspirational for everyone here. So I was just going through the chat again, and I saw a few people go, "Arey, ye to main hi hu," Mary story. Yeah, I yeah, saw meri that. story hai. Yes, so Yeah, I'm sure the session has turned out to be fruitful for our correct. learners. So just curious, like before we go on to the question and answers and interact, you get to interact with our learners as well. Where do you find draw your inspiration from, whether for creating impactful brand strategies or creating music? That has just come up. That question has come up in my mind after Right. listening to your story. Yeah. I think I look at a lot of things like music hai to, good musicians, artists. And matlab, I'm not confined to say one type of art. Hmm. So wo inspiration ke liye but you keep, listening to new type of music. क्या चल रहा है, and even classical music, it kind of helps open your mind. Okay. Books hai, of course, books are the main thing that has helped me. तो inspiration वहां से मिलती रहती है, like you keep getting the Hmm. uh, small ideas from that. So Great. That's very nice to know, Hardik. So, how has your journey at MIT SD shaped your career growth? Any skills that you have gained till now that you are already applying maybe in your current profession or current role? in fact, see, I think I've just started here. Hmm. We just started our course last week, and Okay. what I learned, of course, I went through the LMS right away Hmm. when it came. Hmm. और एक चीज मैंने सीखी कि देर इज सो मच दैट आई कुड हैव लर्नड एंड अप्लाइड इट बैक देन इन माय कंपनी. Hmm. बहुत सारी चीजें थी कि ओके आई आई कुड डू दिस, मैंने ये किया था, बट a lot of things were new for me, and I think that is going to be, that journey is going to be fantastic next couple of months for me. Yes, yes, Yeah. Hardik. Definitely looking forward. We'll now open the floor for questions from our audience.
from our participants, fellow students. This is your chance to interact. Obviously, you have been interacting on a chat all throughout the session, but you can now unmute and gain deeper insights in today's discussion. Thank you, Reshma. Yes. Yes, participants, you can now unmute. Hello. And please raise your hands. Yes, Gia, please go ahead. Yeah. Hi, Trupti. Hello, Hardik sir. Okay, I Hello. joined in really late, so I know I missed out on a great session here. I'm so sorry. No But worries. I just went through your profile, and you have studied at Vancouver Film Institute. Now Correct. you're into brand management, and this is Yeah. literally I've been looking for someone to talk to because I've been working in film industry for past 12 years, and Wow. now I'm in the transition period where for I have to change the location. And since the film industry in Bombay, so I have been very skeptical about few things, and I've been thinking of pursuing the brand management thing and everything. So Correct. I'm actually really happy right now to have someone with the same journey almost. So I I'm glad. really want to understand from you how that transition can be dealt in a better way, what things to look out for, and what needs to be done. Like, because obviously there Yeah. are like maybe related in some way, but major Right. two different industries. So what things I need to, because I've been working as a creative director for feature films. So Awesome. Okay. yeah, and now for the brand management thing, I'm like focusing on that. So if Correct. you can just guide me on that, it would be extremely helpful. Sure. See, first thing first is, the best part of being creative Huh. is everything is all about content, right? Okay. Whether it's Yeah. brand or visuals or, you know, so whatever you have applied, say, as a creative director, right? Uh-huh. You try to find out what's similar in the brand management factor. Like for example, like when we started our strategy at Now Floats of making, small clips and videos, Hmm. right? I kind of used my knowledge of, animation and filmmaking to, Hmm. do those things. So Hmm. you need to maybe find out those qualities and, if you're in a transition to create a portfolio, right? Hmm. You can create something similar. Okay. Because see, you are a storyteller, right? I Hmm. mean, Hmm. and storytelling is the key everywhere. Hmm. Brand's journey is storytelling about a brand. Hmm. कि हम Yeah. क्या है, हम क्या दे सकते हैं, right? So Hmm. think of it as a movie only. You have to, package it in a way that everybody loves it. Kind of. Okay. Is there any specific things that need to be unlearned before you learn something different in this? No, Because no. So one thing is you can't unlearn what you have learned. It will always be there and it will always help you. okay. It will definitely help you. See, somewhere, so once you start a little, dive a little deeper in brand management, you will understand a lot of factors that you have learned. I mean, Hmm. you are already good at team building and teamwork Hmm. because Hmm. you knew how to, filmmaking is a very stressful task, Yeah. correct? And Yeah. I know, like I tried sometime, but I couldn't do it. Hmm. So you know how to handle people. So there are a lot Hmm. of qualities, if you see, are Hmm. like similar from there, which can be Hmm. applied here as well. So you Hmm. are already an effective leader, kind of. You just Hmm. need to, check what are the things that you need to apply Okay. for these positions. Right? Okay. Okay. Thank you. I think. हाय सर। Hi. Uh, is सर मुझे भी this? एक थोड़ा डाउट था। हाँ, बोलिए ना. सर मैं भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ 5 साल से। अभी 6 साल हो एक्सपीरियंस है। Okay. लेकिन मैं खुद का कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू करना चाहता हूँ मेरे गांव में। अभी अच्छा. इसलिए मैं इधर पीजीडीएम एग्जीक्यूटिव कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैंने इधर ही लिया था एमआईटी में। अभी 6 महीने 9 महीने हो गए सर। अभी Correct. एग्जाम लेना है और मैं कुछ वो नेगेटिव थॉट आता रहता है सर, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ऐसे भी कैसा करना है। लेकिन मैं जॉब
शुरू से भी कुछ करना है, जॉब ज्वाइन किया ना सर, तब से 6 साल से मेरा मन में वही एक ही है। मेरा खुद को कुछ करना है, वो कैसा करना, उसका मैं कैसे फोकस करना, उसके बारे में थोड़ा बताना सर। एक चीज ना, सी, एक अच्छी बात है कि आपका ड्रीम है कि मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज करना है, लेकिन अब वो करने के लिए आपको थोड़ा एक स्टडी करना है। आप अब यहाँ पे है तो परफेक्ट है कि अपनी कंस्ट्रक्शन चालू करने के लिए आपको क्या क्या एस्पेक्ट्स लगेंगे, क्या क्या चीजें आपके पास ऑलरेडी है और क्या क्या नहीं है, राइट? हम्म। तो उस हिसाब से हाँ आप एक चेकलिस्ट बनाइए और एक रोड मैप बनाइए कि 2026 मार्च में मैं अपना ये शुरू करूं। तो मुझे हर महीने क्या चेंजेस चाहिए, क्या चीजें मुझे अरेंज करनी होगी, वो मैं करूंगा। सी, और हाँ बोलिए और आप। थोड़ा ऐसे, थोड़ा हम लोग थोड़ा सॉफ्ट स्किल में थोड़ा पीछे है। हम लोग गांव में पढ़ाई किया था, लेकिन करने के लिए मन में इच्छा है, और सीखने के लिए कुछ लिए कुछ आइडिया है तो बता सकते सर, हम लोग कैसे सॉफ्ट में इम्प्रूवमेंट हो जाए, और इससे ऐसे सर फिजिक्स। राइट, करेक्ट। सो एक तो मैंने जैसे बोला कि आप अगर कलीग्स हैं आपके जो थोड़े ज्यादा बेटर है सॉफ्ट स्किल्स में या कम्युनिकेशन में, उनके साथ बात कीजिए, कोई भी टॉपिक पे बात कीजिए, या न्यूज़पेपर्स पढ़िए, उसमें जो लैंग्वेज है वो रिपीट करने की ट्राई कीजिए किसी से बात करते हो। तो धीरे हाँ धीरे, बट अपार्ट फ्रॉम दैट एक कुछ ना कुछ देर आर क्लासेस है काफी, एंड हमारे यहाँ बूट कैंप्स जो होते हैं, आई थिंक वहाँ पे भी काफी चीजें आती है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। बट वो हाँ सर। थोड़ा एफर्ट आपको डेली बेसिस पे डालना पड़ेगा, वो एक दिन में नहीं होगा कुछ, हाँ थोड़ा सर। थोड़ा रोज, है ना? थैंक यू सर उसमें। बल्कि Thank you, Raghu, for the question. Also, Raghu, one thing you can also start recording yourself. आप खुद को ना बात करते हुए रिकॉर्ड करो. इवन दैट वो भी आपको चीज काफी हेल्प करेगी इन पब्लिक स्पीकिंग में भी, कि सॉफ्ट स्किल्स के रिलेटेड. ऑल्सो इट विल हेल्प यू इन योर इंग्लिश स्पीकिंग. सो आप वो भी एक चीज ट्राई कर सकते हो. इट विल हाँ, अगला डेफिनेटली हफ्ते हेल्प. एक इंटरव्यू है मैम, इसलिए उसका उसका प्रैक्टिस करूंगा। अगला हफ्ते एक इंटरव्यू है अच्छा. प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिलेटेड। हाँ, इसलिए परफेक्ट, देख रहा था अभी ओके. ओके. ग्रेट। यस, शिव शंकर. आई थिंक इज ऑन यू, शिव पे। शिव शंकर, you can unmute yourself. Yes. गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। Hey, just one request. सर I'm not sir, यार. I'm like your classmate. तो सर बोल के थोड़ा weird feel हो रहा है, but हाँ बोलिए। मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रहा है सर। मैं जो ऐसे मेंशन किया था, कंसिस्टेंस नहीं रह पाता हूँ, और ओके, डिस्ट्रैक्शंस मीन्स मेरे पास काम बहुत है इस टाइम पे, पर्सनल भी है प्रोफेशनल भी है, बट करेक्ट। डिले, डिस्ट्रैक्शन की वजह से काम बहुत डिले हो जा रहा है। मतलब हर हम्म, एक चीजें पता है ये मैं गलत कर रहा हूँ, बट होता है एक टाइम पे आके वो ठीक है कल कर लेंगे, कल कर लेंगे करके करेक्ट, डिले करके बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोले, मतलब डिस्ट्रैक्शन की वजह से मैं वेल परफॉर्म नहीं कर रहा, और जब डिस्ट्रैक्शन बीच में अगर हट जाता है तो हम्म, मैं फील करता हूँ कि सर विद इन अ वीक में 15 डेज 20 डेज का गोल अचीव कर लेता हूँ, बट डिस्ट्रैक्शन बार बार हमेशा प्रॉब्लम कर रहा करेक्ट। एक तो आई थिंक डिस्ट्रैक्शन जो है उसको आपको, मतलब कहीं ना कहीं उसको कुछ भी करके बंद करना पड़ेगा, या उसको डिवाइड कर दो। जैसे मैं बोला टाइम टेबल, डिस्ट्रैक्ट होते, सपोज मैं डिस्ट्रैक्ट होता हूँ मूवी देखते, मैंने 1 घंटा रख दिया है कि मैं वो मूवी देखूंगा 1 घंटा, तो आप डिस्ट्रैक्शन को भी टाइम दे दो, लेकिन फिर उतना ही टाइम दीजिए, राइट? दूसरा आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे आप 5 चीजें कल पे छोड़ रहे हैं ना, आज एक कीजिए, 4 कल पे छोड़िए, ऐसे कर करके ऐसा होगा कि कल पे आप कुछ नहीं छोड़ेंगे। बट आप एक साथ सब खत्म करने की ट्राई करेंगे तो शायद फिर आप छोड़ के ना वो जो डिस्ट्रैक्शन है उसमें वापस चले जाएंगे। सो स्टार्ट स्मॉल, थोड़ा थोड़ा करके। है। जी सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। Yes. Thank you, Shiv Shankar. Yes, students, you can go on to ask the next question. Yes, Radhe.
Please go ahead. गुड आफ्टरनून मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं बात करते रहता हूँ तो उसके जो ठीक है तो मेरे कुछ सीनियर जब उनके सामने जब मैं जाता हूँ तो बात करने में काफी हिचकिचाहट मेरे को लगता है कि मतलब क्या एकदम मतलब क्या बात करनी चाहिए जो मुझे याद भी रहता है तो मैं फिर वो भी उस समय से मतलब भूल जाता हूँ। तो मुझे क्या ऐसा करना चाहिए कि वो ऐसा ना हो। पर्टिकुलरली होता रहता है कभी। राइट, एक एक आप कर सकते हैं कि एक तो पहले ना वो सीनियर्स स्पेशली हिचकिचाहट ये होती है कि वी जज आवरसेल्व्स एज लेसर देन दैट पर्सन, कि हमें लगता है कि अरे उनके सामने कैसे बात कर, वहीं पे कॉन्फिडेंस आधा चला जाता है। राइट, आपको अगर करना है तो आपको जो बात करनी है ना उसको एक छोटे बुक में लिखिए, 2 बार ओवर एंड ओवर बोलिए एंड जाके फिर बात कीजिए, फिर वो छोड़ छोड़ देंगे आप वो आदत। बट एटलीस्ट आप खुद को ट्रेन करते रहेंगे ना माइंड को कि सब ठीक है, दूसरा ही कोई ह्यूमन बीइंग ही है जिससे मैं बात कर रहा हूं। तो उस हिसाब से आप अगर अप्रोच करेंगे तो बेटर रहेगा। वो क्योंकि थोड़ा फियर रहता है, हम सब में रहता है कि कोई सीनियर बात करता है तो हम थोड़ा सा हिचकिचा जाते हैं। राइट, यस सर। आई ओके सर, थिंक थैंक यू सर। ऋषिकेश, हाँ वेलकम, हाँ थैंक्स ऋषिकेश, सम ऐप फॉर इंग्लिश स्पीकिंग एज Sir, I not understood stated point. which one? Stated point that in this PDF was. I am not getting it. Some point in the in the PPT he is mentioning. He is not been able to Yes, understand. Which point this is it? ask point. Hesitate to ask for help. Hesitate to ask for help. हाँ, hesitate to ask for help. समझ वी मतलब हम सोचते हैं ना कैसे पूछूं, मतलब आज काम नहीं हो रहा है, Hmm. देयर इज सम एरर। हम लोग बहुत बार ना अपने कॉलीग से या बॉस से पूछते नहीं है, हम परेशान हो जाते हैं, जबकि वो रहेगा 1 मिनट का काम। तो वो पूछना ठीक है, इट इज ओके कि मुझे ये नहीं समझ पड़ रहा है, मुझे ये नहीं आ रहा है, प्लीज हेल्प। ठीक है, उसके बावजूद जैसे मैंने बोला बिजनेस है अगर आपका, तो Hmm. मेंटर्स है, कोचेस है लिंक्डइन वगैरह पे, उनको रीच आउट कीजिए आप, उनसे सीखिए कि कैसे मैं अपना बिजनेस बेटर मैनेज कर सकता हूँ। तो ना Yes, sir. पूछना, हेल्प मांगना बहुत डिफिकल्ट है, बोलने के लिए इजी है, हेजिटेट, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर हेल्प, लेकिन Hmm. आज हमें जब किसी की हेल्प लेनी होती है हम 2 बार सोचते हैं, पूछू के नहीं। Yes, करेक्ट, sir. तो वो चीज थोड़ा सा उस पे वर्क करना है। Yes, sir. Understand, sir. थैंक यू। Everybody is nicely sharing some good things with the Yes. teams. Yeah, that's nice. Lot of interaction going on in the chat box. Yeah. Students, please raise your hands if you're willing to ask anything else related to the topic. It's a very interesting topic. You can unmute yourself or put it in the chat, your question. Yeah. Ma'am, Fear taking hello risk. ma'am. I am Yes, not please. understand. Hello ma'am. My name is Nilesh. I am asking a question. Yes, Okay. Hardik please. sir, just Yeah. please suggest me some practical example because I am very less patient, impatient person. Like मुझे बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है. Some like other false statement or not following someone my orders or my instruction, like in my family Right. members also. But I somehow control myself in the last past years also, but somehow it is not up to date or in the benchmark that I still fighting with that my point that I am very getting angry at the very early, just instantly pick up. So please give me some practical lessons to improve or eliminate such thing, please sir. That Thank you. is a very it's a little difficult question for me because कैसा है कि we all have different ways to overcoming anger, right? One of the things is I think ma'am will agree that anger management is required. कि
और वो एक कंप्लीटली अलग टॉपिक है, बट आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा माइंडफुलनेस रखिए। आप हमेशा ये देखिए कि सामने वाला जो सिचुएशन में है, राइट, यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड उनके, बोलते हैं ना, उनके शूज में आप सोचिए कि कैसा फील हो रहा है, एंड फिर शायद Right. आप थोड़ा सा काम डाउन होंगे। तो एक वो कंसिडर, एक्नॉलेजमेंट, एम्पैथी जो हमने बात की, Hmm. वो बहुत जरूरी है। वो शायद हेल्प करेगी। या अदरवाइज आपको ऐसा लग रहा है कि एकदम आउट ऑफ कंट्रोल है, तो डेफिनेटली एंगर मैनेजमेंट एक कहीं करना जरूरी है, विच इज ऑल्सो फाइन। आई नो लॉट ऑफ पीपल हु डू इट, आई मीन एट टॉप लेवल्स करते हैं, बिकॉज काम का प्रेशर इतना होता है, राइट? Thank सो you, sir. Thank you very much, sir. वेलकम, Thank you. वेलकम। Thank you so much for the question, Nilesh. Also, he has Hardik has shared empathy, which is a very good point in controlling your impatience, in controlling your anger. Second point is you have to also identify your triggers. I would like to add over here कि क्या आपको exactly क्या trigger करता है. There has to be a pattern. So please, make sure you are being mindful of that. Then you will be, in that cycle of controlling your impatience. And yes, I hope that answers your Uh, question, Nilesh. yes, thank you, Trupti, ma'am. Thank you. Thank you. Yes. Good afternoon, sir. Hi, hi, good My afternoon. name is Pawan Kumar, sir. Okay, hi Pavan. I have lots of time to try to attend to interview. Okay, but Okay, whenever I attend to interview, that times I'm totally blank out, sir. Don't mind I any question and give answers. That times very difficult to attend an interview, sir. So what correct. we will do, sir? So key. One thing is build confidence. I think क्या हो रहा है कि when you are maybe right now also when you are talking, I can feel that थोड़ा shy feel कर रहे हो आप बोलने में, या फिर you're not 100% confident in saying that. That Yes, can make you anxious. Anxiety बढ़ेगी, आप किसी के सामने बैठोगे, डर के मारे सब भूल जाओगे। एग्जाम में होता था अपने साथ, राइट? जी, तो ये चीज के लिए एक वही है कि जैसे मैंने बोला कि एक बार ना, जैसे मोस्ट इंटरव्यूज सेट होते हैं, कुछ क्वेश्चंस सिमिलर रहते हैं, राइट? आप उनको प्रैक्टिस करो मिरर में, फ्रेंड के साथ। ओवर एंड ओवर प्रैक्टिस करोगे तो आपको वो हैबिचुएट हो जाओगे आपके, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चंस के आप आंसर दे पाओगे। एंड इफ यू कैन आंसर दोज, यू विल गेट द कॉन्फिडेंस टू आंसर द अदर टेक्निकल वंस आल्सो, राइट? yes, आई नो बहुत बार होता है कि हमें पता है सब कुछ, और फिर रियलाइज होता है कि यार मैंने नहीं बोला उधर, राइट? जी। या एक्चुअली सर मैं अभी वर्कशॉप सुपरवाइजर हूँ, बट मैं इस वर्कशॉप मैनेजर के लिए ट्राई कर रहा हूँ। So, ओके, 2 बार 3 बार मेरा हो गया कि इंटरव्यू पास ही नहीं हो पाया सर। और टोटल मैं रिलीज कर रहा हूँ कि मैं टोटली मेरा फेल्यूर है, क्योंकि जो क्वेश्चन जान रहा हूँ उस समय वो जवाब दे नहीं पाता हूँ सर। समझ गया मैं। आप जी, लिस्ट बना लीजिए ना, एक जी, सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाइए और उसको पढ़ते रहिए, जैसे हम एग्जाम में पढ़ते थे। दैट इज यस द बेस्ट थिंग टू डू। फिर वो अपने आप सबकॉन्शियसली निकलेगा सब आंसर, जी। है ना? हाँ, थैंक यू सर। वेलकम। Yeah, GA is correct. You can do a mock interview. So that's what I was saying. You can do such things with your friends and all, because or family, that helps. Mm, Suvadeep has raised his hand. Yes, Suvadeep, please go ahead. Yes, good afternoon, ma'am and sir. Good So afternoon. Good afternoon. actually I am in a construction background. I am working in a construction multinational company. So actually Okay. my question is, whenever I have any target to achieve a target, it can't let me think out of from that target. There always it is give me stress to achieve that target, achieve that goal. So how can I handle that stress? This is the question actually. See, when you get the targets, I'm sure you have a timeline, na? कि Yes, right. एक 1 month में करना है. I'll say write down day 1, day 2, day 3. What I am going to achieve on day 1. Always have a buffer. Day 2 को what I'll Right. achieve. And every day you check, आज ये अचीव हुआ क्या, वो ब्रेकडाउन में,
थोड़े टाइम बाद यू विल फील कॉन्फिडेंट ऑल्सो, और वो स्ट्रेस भी कम हो जाए। स्ट्रेस से क्या होगा, फिर आप वो उस दिन काम नहीं कर पाओगे, दूसरे दिन काम नहीं Right. करोगे, और वो काम बढ़ते जाएगा। तो आप काम को ऐसे छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लो, है ना। सो दैट कैन हेल्प यू अलॉट। Right, right, right. Thank you, sir. Thank you. वेलकम मैम। सी द फैंटास्टिक पार्ट हियर इज इन द चैट देयर आर सो मेनी पीपल, जो सारे लोग कुछ ना कुछ सजेशंस दे रहे हैं, which says we all are there in it together. So we all have the journey. Yeah, you can unmute. Sir, fear taking risk, not understand. Acha, fear taking risks. So basically, it's don't fear taking risks. So you should मतलब एकदम ही क्रिटिकल रिस्क मत लीजिए, बट छोटे मोटे रिस्क लेना जरूरी है। जैसे आप एक साइड में छोटा प्रोजेक्ट चालू कर रहे हो, या कोई चीज जो पैशन से कर रहे हो उसके लिए आप एक आध दिन ऐड कर रहे हो, तो ये रिस्क है, बिकॉज देर आर नो रिवॉर्ड्स राइट अवे उसमें। करेक्ट। या फिर आप कुछ बिजनेस मॉडल चालू कर रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उसके लिए आप वो अगर इट्स कैलकुलेटेड, अगर आपको पता है कि इतना एफर्ट जाएगा, इतना प्लानिंग होगा तो सब ठीक रहेगा, तो यू शुड टेक दैट रिस्क, तो ही ग्रोथ होगी। Yes, sir. बिकॉज रिस्क हम क्यों नहीं लेते, क्योंकि फेलियर का डर रहता है, बट हमने सीखा कि फेलियर कैन ऑल्सो टीच यू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए यू नो यू शुड Yes, टेक द रिस्क, बट कैलकुलेटेड, नॉट लाइक सब छोड़ छाड़ के बैठ गए करके। yes, sir. Understand, sir. थैंक यू। I am not able to unmute. Yeah. Hello. Good Hello. afternoon. Hello. Okay. Afternoon. Yeah. Sir, I am working from corporate bank to bank manager position. Okay. Yes. Uh, सर जैसे कि मेरे को अभी जो पर डे जो टारगेट डिपॉजिट्स आणि लोन डिसबर्समेंट Right. Right. my under working to 7 to 8 employees, Okay. but not is a properly work. I am not understand you employees but not get achieve target. But Okay. so me and what मतलब इम्प्रेस नॉट मतलब मेरे को इस समझ में नहीं आता कि वो आप उनको कैसे प्रॉपरली एक दो ये कि वो कैसे अचीव करना है कैसे Correct. तो उसमें मेरे को Right. तो मतलब पूरा पर डे टारगेट हमने जो मॉर्निंग जो सेट करते हैं कि आज इतना टारगेट करेंगे इस टारगेट पे बात करेंगे तो अचीव नहीं होता सर। हर बार वही बात होती है। जब इवनिंग में मीटिंग करता हूँ तो उस टाइम में मेरे को प्रॉब्लम आता है। एम्प्लॉय वैसे वैसे दिन भर कॉल करते हैं कुछ जो मीटिंग्स वगैरह रहते हैं मगर मीटिंग्स Right. ये नहीं होता तो उसमें मुझे कुछ थोड़ा ये चाहिए सर कि वो कैसे। एक हाँ, एक आप एक क्वेश्चन खुद को भी पूछिएगा कि ये जो टारगेट्स है, ये अचीवेबल है क्या सच में। ओके। क्योंकि बहुत बार हम टारगेट्स डाल देते हैं, बट प्रैक्टिकली अचीवेबल नहीं होते। जैसे आपने बोला उनके कॉल्स होते हैं, या एक एक जितने टाइम में वो लोग आते हैं, उसमें आप एक बार सोचिए कि कितना एक्चुअली अचीवेबल है। राइट। और ओके। अगर आपको लग रहा है कि वो नहीं हो रहा है, तो आई थिंक वन ऑन वन सबके साथ एक बार बैठ के बात कीजिए कि उनको क्या इशू फेस हो रहा है। राइट। ओके। शायद आपको एक कॉमन कुछ आंसर मिलेगा इसमें से, जो आप फिक्स करेंगे अगर, तो सब लोग शायद परफॉर्म कर पाए। तो मे ओके। बी यू कैन डू दैट। आई थिंक एक बार जस्ट बात करना जरूरी है, एंड ओपन माइंड से। ये नहीं सोचना है कुछ भी बोल रहा है ये तो मतलब ऐसा थोड़ी होता है। उनके लिए जो भी रीजन है वो उनके लिए सही है रीजन, हमारे लिए अच्छा। शायद नहीं है। बट अच्छा। ओपन माइंड से आप सुनिए, एंड फिर ट्राई कीजिए। बट ये भी देखिए कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है उतना टारगेट एवरीडे अचीव करना। अच्छा। राइट। ओके। थैंक यू।
Welcome. Yes, I can see a hand raised, I think it was but the there's same. no. Was there? Yeah, Okay. yeah, yeah, yeah. All right. I think now there will be more Yes. conversations with the classmates Yes. Yes. going forward, definitely. Yes, So, if there are no more questions, are there any more questions, students? You can still share it on the chat. We'll be sharing it with Atik again, so that even after the session, he'll be able to refer to them and answer you back, answer us, so that we'll communicate the same to you. correct. Yes. So moving ahead, before we conclude, Hardik, we'd like to express our heartfelt gratitude for your time and your valuable insights. It's Thank you. definitely it has been a wonderful session, as we have seen with the comments, with the interaction that is going on. So as Right. a token of appreciation, we have prepared a certificate as well to honor your contribution to Synergysphere. Thank you. Yes, we'd like to share that with you. If you stop sharing the screen, we'll be able to share it. Sure. Yes. Madam, Yeah, I today's can will share Yes. the provide. PPT. Yes. Yes. Someone is unmuted. Madam, this is Samartha. Today's certificate you will provide. Certificate नहीं है. Your name, please. Samarth, right? Yes, yes, madam. हाँ, इस सेशन का सर्टिफिकेट नहीं है. द सर्टिफिकेट इज फॉर द स्पीकर. सो ही इज अ लर्नर लाइक यू ऑल of Yes, MITSD. जो स्पीकर होते हैं ना सिनर्जी स्फीयर में, वी प्रोवाइड देम द सर्टिफिकेट. इफ यू वांट टू बी द नेक्स्ट स्पीकर, देन यू विल बी रिसीविंग द सर्टिफिकेट. सर्टिफिकेट ऑफ अटेंडेंस इज नॉट देयर फॉर सिनर्जी okay, स्फीयर. okay, madam. Thank you. Thank you. Yes, Hardik, so this This is is, our token of appreciation for your thank you. effort to honor Thank your you so much. contribution to Synergysphere. Thank you Right. once again, Hardik, for sharing your journey and inspiring us all. And thank you everyone else as well to who have joined today's session. Yes. It was a pleasure having you all interact so beautifully with your peer. This is the main aim. This is the main the aim, the mission of Synergysphere, to connect you all through this distance learning mode as well. So, yes, remember, every challenge is an opportunity to grow, and every fall is a step closer to rising even stronger. So, let's carry these lessons that Hardik has shared with us today forward in our lives. Let's take inspiration from his story as well. Until the next time, stay curious and stay resilient as well, and keep striving for excellence. Goodbye. And also, please, if you want to be the next speaker, we have also shared the registration form for a Synergy Sphere speaker. A registration form is shared on the chat. So please make sure you are filling it. Yes. So goodbye and take care. Have a great day, everyone. Thank you, everyone. Thank Thank you you so so much. much.